Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Jawad Usman Arshad, Assistant Professor, Department of Computer Science. Welcome all of you in the subject of programming fundamentals, or we sometimes called it as intro to programming. इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स दिखाऊंगा एंड मैं उसके ऊपर कुछ बात करूंगा. Since we are in a recording mode and we do not have a two-way communication, so it may be possible कि कुछ questions आपके mind में आ जाए. Then how we will answer these questions, or you will get the clarity of these questions, ये आपके ज़हन में आएगा. For that purpose, we have the WhatsApp group. हमारे पास WhatsApp group भी है. We have I will also share the email address in these slides. You can also send me an email or approach me through WhatsApp group. और वहाँ पे आपकी जो क्यूरीज हैं वो इंशाल्लाह एड्रेस की जाएंगी. सो स्टार्ट करते हैं हम अपने सब्जेक्ट को, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को. टुडे वी हैव द फर्स्ट लेक्चर एंड दैट विल बी द इंट्रोडक्टरी लेक्चर. अब चूंकि आप सारे स्टूडेंट्स आए हैं फ्रॉम द कॉलेज टू द यूनिवर्सिटी, अनफॉर्चुनेटली हम वो फिजिकल क्लास अरेंज नहीं कर सके ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस. इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी है कि हम उसको स्टार्ट नहीं कर पाए. अगर जो आपकी फिजिकल क्लास होती है तो उसमें हम मज़ीद मैं कुछ चीज़ें आपको टेक्निकली और कुछ सब्जेक्ट के हवाले से भी बताता जो यहाँ पे हम नहीं बता सकते क्योंकि वी डू नॉट हैव द टू वे कम्युनिकेशन. लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी समझूंगा बिकॉज दैट थिंग्स विल बिकॉज दीज थिंग्स और जो हम बात करेंगे वो बहुत ज़रूरी है आपको सेमेस्टर में साथ ले चलने के लिए. उनमें कुछ फंडामेंटल बातें मैं आपसे के साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कोर्स में आगे निकलते जाएंगे. सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द एनुअल सिस्टम. एनुअल के अंदर द स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेन रिलैक्स टिल द एंड ऑफ द ईयर. और एंड ऑफ द ईयर में फिर वो अपना उसमें अपना इनपुट देते हैं और अपना सिलेबस और जो कोर्स वगैरह है वो कवर करते हैं और उसको याद करते हैं और पेपर के लिए तैयारी करते हैं. बट द सेमेस्टर सिस्टम इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट एनुअल सिस्टम. सेमेस्टर सिस्टम का एक रूल है कि डेली का काम आपने डेली करना है. ठीक है, अगर आप डे वाइज एक्टिविटीज अपनी कंटिन्यू रखेंगे देन यू विल गेट अ सक्सेस. और आपका CGPA जो कि वेरी मैटर करता है इन द BS ऑनर्स प्रोग्राम, तो वो आप अचीव कर सकते हैं. और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देन यू विल फील द डिफिकल्टी एंड यू विल रियलाइज इन द सेमेस्टर कि आपका सेमेस्टर इतनी तेज़ी से निकल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके सर पे पहुंच चुका होता है. तो सो यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड यू विल हैव टू डू द डेली रूटीन वर्क ऑन डेली बेसिस. जो आपको लेक्चर मिलेगा उसको आपने सुनना है, उसको आपने रीड आउट करना है, हेल्पिंग मटेरियल उसका आपने देखना है. और चूंकि यूनिवर्सिटी के अंदर सेल्फ लर्निंग का कंसेप्ट ज़्यादा पाया जाता है, दैट्स वाई मैक्सिमम जो एजुकेशन होती है वो ऑन द स्लाइड्स होती है. एंड स्लाइड्स जो होती हैं वो बेसिकली निचोड़ होती हैं आपकी पूरे एक पेज का, पूरे एक चैप्टर का. वो स्लाइड्स होती हैं और यू शुड हैव टू कंसल्ट द बुक. उसको बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका जो नॉलेज है उसका लेवल जो है वो स्कोप जो है वो आपका बढ़ सके. द सेकंड थिंग इज़ कि जो लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे वो थोड़े शार्ट होंगे बिकॉज उसकी वजह ये है कि वी हैव द इंटरनेट प्रॉब्लम और हेयर. और ऐसे भी क्लास के अंदर जो लेक्चर होता है वो अगर हम उसे 1.5 आवर काउंट करें तो उसमें डिस्कशन हो रही होती है, आपकी कम्युनिकेशन हो, आपकी टू वे कम्युनिकेशन हो रही होती है, क्वेश्चन आंसर्स हो रहे होते हैं. तो लेक्चर जो है वो अगर आप उसको वन साइडेड काउंट करें तो वो ऑलमोस्ट 1 आवर का तकरीबन काउंट होता है या 45 मिनट्स का होता है. बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ साथ चल रही होती हैं. सो हियर वी हैव वन वे कम्युनिकेशन. और एक ये बात है, दूसरा इंटरनेट का इशू है. सो we will try to upload the lectures of maximum 20 minutes or 30 minutes. उससे हम ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें डाउनलोड का भी इशू आएगा और अपलोड का भी इशू आता है और फिर उसका आपको कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होगा. So welcome all of you in the course of the programming fundamentals. So be remember के the subject अगर हम उसे programming fundamental कहें या intro to programming, the both are the same. जो आपके सिलेबस के अंदर जो आपका अभी करिकुलम आया उसके अंदर जो रिफ्लेक्ट होगा वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होगा. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द टाइटल एज द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स.
सो सबसे पहले स्टार्ट में जिस चीज़ की स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा फिक्र होती है, एंड दे ऑलवेज थिंक अबाउट इट, जब कभी भी वो कहीं पे भी इनरोल होते हैं, नॉट इन द एकेडमिक कैरियर बट आप कहीं पे भी एग्जाम में जाएं या कहीं पे भी आप जाएं, तो वी ऑलवेज कंसल्ट विद द एग्जाम्स, ठीक है। वी ऑलवेज कंसर्न्स विद द ग्रेडिंग्स। आप कहीं पे भी कंसेप्ट देख लें, तो जहाँ पे भी आप देखेंगे तो हमें इससे बड़ा कंसर्न होता है। सो जो पहली स्लाइड आपको नजर आएगी वो कोर्स इवेल्युएशन की आएगी, कि आपका क्वेश्चन ये होगा ये हम पढ़ेंगे तो सही, लेकिन हमारी एवेल्युएशन कैसे होगी, आप कैसे हमें एवेल्युएट करेंगे, आप कैसे हमें ग्रेड देंगे। तो उसके लिए है कि वी हैव two types of exams in the semester system. The one is the midterm exam, the other one is the final term exams. The second thing with the exams we take is the assessment. So the assessment is what we evaluate you during the whole semester, and how this evaluation will be done with the help of some practical, some projects, or some quiz, or some presentation, or some assignments, maybe like this. So in your whole BScs degree program, we will have two type of courses. The one course is which may be without practical. The second thing is which may have the practical. So far, these two different types of subjects, we have different type of evaluation. For the practical subject, we have we have the evaluation different from those of the non-practical subjects. The second thing is we also write these subjects in some different ways. The concept of credit hours, most of the students hopefully aware from the concept of credit hours, but I would like to explain it over here for your clarity. What is the credit hour? So the credit hour is the hourly teaching in a semester. Like, for example, if I say that we have a subject of the 3 credit hours, so it is associated with the weeks. So 3 credit hour means that the student will teach 3 hours in a week. So एक हफ्ते के अंदर वो 3 घंटे की क्लास देगा. Now it's up to the department. Either they take the class of 1 hour or 1.5 hours or the whole 3 hours. So if we count it as the 1 hour class, then we will have 3 classes in a week for one subject of having 3 credit hours. And if we have 1.5 hours class, so then there will be 2 classes in a week. So hopefully the students understand what is the concept of the credit hours. Now move to the next thing. As I discussed, we have two type of subjects. One is the practical subject, the other one is the non-practical subject. For the practical subject, we write it as 3, then in the brackets we write it as 2-1. When we write it as 3 2-1, then it means that we have a subject of 3 credit hours, where in the brackets 2 means that we have the theoretical class of 2 credit hours, whereas the 1 means that we have the practical of 3 contact hours. So here you can see that we have the concept of this 3 2-1, 4 3-1, and 3 3-0. अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि why I am going to explain these things over here, because we analyzed that after passing 4 years of semester of a student in a university, then someone asked the student that what is the concept of credit hours. Most of the students even do not know, after having 4 years in the university studying 4 years degree program, they do not know the concept of credit hours, which is a very alarming situation. And they even feel shame to ask anyone after having their degree that what is the concept of credit hour. So I think that some fundamental concepts or things should be very clear to the student in the start of the semester, which shows the beauty of the degree program the student is studying.
That's why I am consuming the first 10 or 20 minutes on these fundamental things, which should be very clear to all of you. So here we have three different concepts. You can see in the slide that we have 3 2-1, 4 3-1, and 3 3-0. So what does mean by this? So the first is 3 2-1. You can see over here. Here the 3 means that we have the 3 credit hour subject. Here 2 means that in these 3 credit hours we have the theory of 2 contact hours, and we have the practical of 1, where 1 means 3 contact hours. So when we will apply this to any student, then the student will teach, will have the timetable, will have the class of how many contact hours. He will have the contact 2 contact hours of theory class and 3 contact hours of practical class in a week. So in this scenario, the student will take the 5 hours class in a week for this specific subject, in which we have 2-1 concept. I hope the students understand. The same concept with this one 4-3-1. When we will count it as 4-3-1, then it means the student will have the contact hours of three, 3 contact hours of theory for that specific subject, and 1 contact hour which will be equal to the 3 contact hours of the practical for that subject. So in this subject of programming fundamentals, you will see in your curriculum, in your transcript, when you will get this, or you can see your curriculum, that we have the 4-3-1 for this programming fundamental subject. So it means that for this programming fundamental subject, we will have 6 hours of class in a week. From these 6 hours, we will have 3 hours of the theory and 3 hours of the practical. So in this way, the last one is 3-3-0. So everyone can explain this. I will also do it for you so that your concept will be clear. So here 3-3-0 means that when we write it 3, so it means that we have the 3 credit hour subject. बटन So है मैं we इसके ऊपर have प्रेस the कर दूंगा। three अब credit सेव hour साथ साथ subject, इसलिए करना है क्योंकि in which अक्सर ये the होता है कि हम student will सारा काम कर teach चुके होते हैं three और उसके बाद hours जो है वो of सेव नहीं होता theory और कोई for भी एरर this आ जाता है तो subject. बड़ा So मसला बनता है। तो ये चूंकि एक एक in चीज this मुश्किल है subject तो इस वजह of से आपने साथ साथ सेव करना है। हम 3-3-0, चैनल में थे, चैनल में जाने the के बाद student will हमने have अब एडवांस only सेटिंग के the अंदर जाना class है। यहाँ of पर ये आपसे सबसे three पहले पूछेगा contact डू यू वांट hours टू in सेट a योर चैनल week. एज मेड फॉर किड्स। क्या I आप hope अपने you चैनल को understand. बच्चों के लिए बनाना चाहते मैं हैं? इसको दोबारा मतलब रिपीट कर आपके देता